चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्राउनी की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम डार्क चॉकलेट और 120 ग्राम मक्खन। हमें इसको इकट्ठे मेल्ट कर लेना है। आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं या फिर किसी पैन में गर्म पानी करके उसके ऊपर रख के आप इसे मेल्ट करें। हमने इसमें गर्म पानी ले लिया है। अब हम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। It sound right, boys. चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। हमने लिए हैं 2 अंडे। उसमें हम डालेंगे 150 ग्राम ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके लिए हमने इसके नीचे पैन में गर्म पानी रख दिया है। 1 से 2 मिनट आपको बस इसमें रखना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। देखिए इसका कलर लाइट हो चुका है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप इसे हाथ से तब तक बीट करें जब तक इसका कलर लाइट ना हो जाए। अब हम इसमें अपना चॉकलेट मिक्सचर ऐड करेंगे। It sound right, boy. अब हम इसमें ऐड करेंगे 40 ग्राम मैदा और 25 ग्राम कोको पाउडर। It sound right, boys. अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिन को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। It sound right, boys. इसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। हमें अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करना है। उसके बाद 170 डिग्री पे 20 से 25 मिनट हम इसे बेक करेंगे। ये देखिए ब्राउनी हमारी अच्छे से बेक हो गई है। अब हम इसे तकरीबन 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद कट करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे कट करेंगे। It sound right, boy.
It sound right, boy. देखिए हमारी ब्राउनी बनके तैयार हो चुकी है, कितनी फजी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।